Hi everybody, welcome back to my channel. So this session I'm going to continue like backup and restoration things of checkpoint firewall. So see, backup is very important and it's play vital role for any devices, any technology. So I'm going to create one playlist for checkpoint backup only. Okay. So this session is just for theory part, and in next session I'm going to you know so in the lab also, for example, we'll try to take the backup and we'll try to do some modification and then we'll try to revert with the help of backup. Okay. So basically, why generally we take the backup in the production for our any devices? Okay. So basically, backup and recovery is the process of duplicating data and storing it in a secure place. So main purpose of backup is to create copy of data that can be recovered in the event of failure. So हम backup क्यों लेते हैं? For example, you are upgrading your devices, you are doing any changes, you are doing any activity, okay? और activity के दौरान, for example, we face some challenges. May our devices got failure. You know, at that times, if you don't have backup, then it is very critical to restore everything from the existing setup perspective, and maybe it is very critical and it is very risky related to your job also because you are doing changes and आपने बैकअप नहीं लिया, so it's not totally come to you कि आपने बैकअप क्यों नहीं लिया, आप पर बात आएंगे, आप पर क्वेश्चन आएंगे. So it is very important to take the backup while doing any major changes so that we can restore in the event of failure. And it is highly recommended for any technology loading any changes. First try to take the backup. So there are some backup types in checkpoint, so we'll see one by one. Okay. So in security gateway, that is checkpoint, there are three type of backup. Then that is first one is snapshot, second one is backup and restore, and third one is safe config. Snapshot is basically it is one of the critical, one of the importance, and it's a vital role, especially when you are doing any upgradation, doing any major activity or on the devices. For example, you are upgrading these boxes. For example, from R80, R81.10 to R81.20. So, or for example, you are doing hotfix installation. At that time, snapshot is mandatory in checkpoint. Okay, whatever it is VM based or whatever it is physical, that is physical hardware. In both case, it is highly recommended to take the snapshot. Snapshot is going to if you're taking snapshot backup, it is going to take all the configuration like network interface, routing, hotfix, OS, except logs. Okay. In case of backup and restore, it's kinds of local backup. It is not going to take like logs and OS related configurations. So we'll try to see the difference between snapshot and backup restore. Third one is safe config. Okay. So safe config basically, for example, whatever changes we generally do on the firewall, we need to hit command like save config. Then it is going to save the checkpoint database. Okay. Or we can save your configuration in some file also, like save configuration, give the file name. Okay. So these are the types of the backups in checkpoint, like snapshot, backup, restore, and save config. Okay. And we'll try to see one by one. So I mentioned earlier snapshot. It is one. It play a vital role, especially when you are doing upgradation of the device, right, or hotfix installation. It is very important to take snapshot backup. Okay. It is going to take if you're going to take snapshot backup, it is going to contain your configuration, operating system, and even for routing, hotfixes,
OS related things. Okay, and snapshot is the best way to restore the entire configuration. However, it is very extensive in size and took more CPU and memory to create a restore snapshot. So snapshot जब आप लेते हो तो बेसिकली ये टाइम कंज्यूमिंग होता है and इसके लिए स्पेस भी चाहिए and it is CPU intensive. So it is recommended to do in the नॉन बिजनेस आवर. फॉर एग्जाम्पल जहां पर आप देखो कि आप एक टाइम के बाद क्या होता है कि कंपनी में ट्रैफिक कम होती है ऑन फायरवॉल. सो उस टाइम पर आप इसका बैकअप लो because it is CPU intensive and it is big in size. That is it is recommended to take at the times of major activity like upgradation or hotfix or migration. Okay, snapshot can be used to back up both your firewall and management models. Means snapshot is applicable for both security gateway as well as management server. एंड द डिसएडवांटेज ऑफ दिस यूटिलिटी आर द जनरेटेड फाइल इज वेरी बिग. मैंने बताया कि बहुत साइज में बड़ा होता है एंड कैन ओनली बी रीस्टोर टू द सेम डिवाइसेज. एंड एज पर चेक पॉइंट होता है कि बैकअप आप सेम डिवाइस पर रीस्टोर करो बिकॉज इट कंटेन्स मैक एड्रेस ऑल्सो. ओके, सो मे बी डिफरेंट डिवाइसेज पर मे बी डू नॉट वर्क. सो मेरा एज पर माई एक्सपीरियंस आई रिवर्टेड ऑन द सेम बॉक्स because it contains the MAC address also. So these are the these are the actual meaning of snapshot backup. It big in size. It is going to take all the configuration backup, including OS, except logs. It is not going to take your logs backup. Okay. Let me erase it. Second one is system backup and system backup and restore. So restore is the part like जब हम backup लेंगे and उसको restore के टाइम पर हम restore करेंगे. अभी हम system backup पे बात करते हैं. Stands of local backup. So system backup can use to backup current system configuration. A backup creates compressed file that contain the checkpoint configuration, including the network and operating system parameter, such as routing, interface configuration, etc. But unlike snapshot, it does not include operating system. Like इसका अगर आप नॉर्मल बैकअप ले तो सिस्टम बैकअप लाइक इसको लोकल बैकअप भी बोलते हैं. इट इज नॉट गोइंग टू कंटेन योर ऑपरेटिंग सिस्टम बैकअप बट इन केस ऑफ स्नैपशॉट वो उसका भी बैकअप लेगा. ओके, यू कैन स्टोर बैकअप लोकली और रिमोटली. आप लोकली भी स्टोर कर सकते हो और यू कैन स्टोर ऑन आवर TFTP, STP और FTP सर्वर. ओके, यू कैन रन द बैकअप मैनुअली और एंड शेड्यूल. आप बैकअप शेड्यूल भी कर सकते हो लाइक कि किस टाइम पर आपको बैकअप होना चाहिए. इफ यू आर गोइंग टू शेड्यूल इट उसी टाइम पर बैकअप होगा. It does not include an operating system. If the backup and restore is used for a new hardware, OS has to be installed first, then use this backup file. Okay, backup is better when trying to get it done in least amount of time, also supporting automatic scheduling. इस केस में अगर सिस्टम बैकअप लेते हो तो इसमें ऑटोमेटिक शेड्यूलिंग सपोर्ट करता है. एक बात को यहाँ इंपॉर्टेंट रखना, क्या बोल रहा है कि डज नॉट इंक्लूड एन ऑपरेटिंग सिस्टम विद बैकअप एंड रीस्टोर इज यूज्ड फॉर ए न्यू हार्डवेयर. अगर आप न्यू हार्डवेयर में इस बैकअप को डालना चाहते हो तो पहले आपको ओएस इंस्टॉल करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल आपके पास नया बॉक्स आया तो फॉर एग्जांपल पहले उसको R81.10 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, हॉटफिक्स इंस्टॉल करो, देन वी कैन रीस्टोर द सिस्टम बैकअप. सो इट इज गोइंग टू जब आप सिस्टम बैकअप को रिस्टोर करोगे उस केस में आपका सारे जैसे कि नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशंस, अदर कॉन्फ़िगरेशन इज गोइंग टू बी रीस्टोर बट OS is not going to restore. So पहले OS install करो, then reboot this backup. In case of system backup, I hope you guys understand it. Okay. एंड यहाँ पर कंपेरिजन भी हम देख लेते हैं दोनों में क्या है. ओके, एंड नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे कि आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट द लैब. ओके, एंड आई विल ट्राई टू शो यू गाइज like how to take snapshot and how to take system backup and how we can schedule it, how we can revert it. We can see all the things in next session with a live example. Okay, so this is the comparison between the backups like snapshot backup and normal backup, like system backup we can say. See, in snapshot it is taking more time, but in case of normal backup, local backup, it is very quick, like 5 to 30 minutes. I don't think it will take 30 minutes. It is very quick. Size, snapshot is very big in size because it is going to take all the configuration, including OS. But
In case of local backup, it depends upon your configuration, like routing configuration, interface configurations, other network related configuration like SNMP, NTP, other stuff, radius. Backup Gaia OS, it is going to Gaia OS configuration. Yes, it is going to contain OS configuration. It is also going to contain OS configuration. If you are taking snapshot backup, it is going to take the hotfix configuration. Yes, but in case of backup, system backup, it is going to contain nothing. No. Automatic scheduling not possible in snapshot, but automatic scheduling possible in the system backup. Restore from different version, it is possible in snapshot, but is not possible in system backup. Stop checkpoint services, no, no. So backup लेते समय checkpoint services stop नहीं होगा. So you can take any time, but it is recommended to आप non business hour में लो. Require reboot, no. दोनों को लेते समय मतलब snapshot backup लो या normal backup लो, system backup. Reboot is not required. Okay. So backup Gaia operating system configuration is only possible in snapshot, not in normal system backup. I don't think it will be waste. It should be no here. Okay, because operating system backup is not going to be containing system a backup. It is only possible in the snapshot backup. Okay. So हम नेक्स्ट सेशन में क्या देखेंगे? विल ट्राई टू डू लाइव एंड उसके अकॉर्डिंग हम रिवर्ट भी करेंगे. विल डू सम मॉडिफिकेशन एंड देन विल ट्राई टू रिवर्ट एंड वी विल कंपेयर इट. ओके. So these are the types, and it is very very important to be remember and because it is very very important, because if you are doing any changes on the production in the company, backup is very very important, and we need to understand like what is the major difference between snapshot backup and system backup and safe configuration. Okay, so I think there was other backup which it is missing, this one safe config. Okay. So if you run the command like show configuration, and for example, we have taken the output, okay, and if you are doing any changes and if you are doing like save config, is you going to save in the checkpoint database, okay. तो कोई भी आप चेंजेस करते हो फायरवॉल पर चेकपॉइंट पर, अगर आप सेव कॉन्फ़िगर कर देते हो डेटाबेस में सेव हो जाता है. ठीक है. लेकिन आपको अगर क्यों सो कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप चाहिए, लाइक इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, राउटिंग, होस्ट नेम, एसएनएमपी, रेडियस, अदर स्टफ, मतलब ये चीजें चाहिए, तो आप क्या करो, सेव कॉन्फ़िगरेशन एंड देन एक काम करते हैं, लेट मी लॉग इन ऑन द फायरवॉल, सो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू गाइस. 192.168.137.10. Okay, my firewall is off. Yeah, it should be. I think it is not up at the moment. Okay, seems it's rebooting. नो प्रॉब्लम, उसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे विथ लाइव एग्जांपल. तो हम यहाँ आपको बता देते हैं सेव कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा सा. So configuration changes you enter using the CLI are applied immediately to running system to ensure that these changes remain after you reboot. This is to save your changes permanently. जब हम ये सेव कॉन्फ़िग करते हैं, जैसे कि आप कोई भी चेंजेस करते हो, अगर सेव कॉन्फ़िग नहीं करते हो, इट इज गोइंग टू बी, अगर फायरवॉल आपका रिबूट हुआ वो सारे लॉस हो जाएगा. इट इज रिकमेंडेड टू सेव कॉन्फ़िग, टू इज गोइंग टू स्टोर इन योर सेव इन योर डेटाबेस, चेक पॉइंट डेटाबेस. ओके. ये कमांड सेव कॉन्फ़िग होता है, ये होता है सेव कॉन्फ़िगरेशन फाइल नेम. आप जो भी चेंजेस किए फायरवॉल पर, आप चाहते हो कि उसका कॉन्फ़िगरेशन एक फाइल में सेव हो जाए, सो आप सेव कॉन्फ़िगरेशन फाइल नेम दे दो एंड एक्सपोर्ट में जाओ, एलएस रन करो, तो जो भी फाइल आपने डाला था, जो भी नेम वहां पर दिख जाएगा. ठीक है. तो उस फाइल के हेल्प से हम बाद में रीस्टोर कर सकते हैं. ओके. अच्छा, ऐसे होगा सेव कॉन्फ़िगरेशन एंड मान लो फाइल नेम का नाम है माई फाइल,
एंड एक्सपर्ट में जाओ और उसको एलिस टाइप करो, तो यहाँ पर माई फाइल आपका आ गया, जो भी आपने फाइल नेम दिया था, और कैट करके उसको पढ़ सकते हो, कैट एंड फाइल नेम, तो आप पढ़ सकते हो, इस तरह से दिखेगा आपको। एंड उसको क्या करते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो नोटपैड पर, एंड सेम थिंग वी कैन पेस्ट ऑन द अदर गेटवे। सो ये कब रिक्वायर्ड होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप नए सिस्टम रेडी कर रहे हो या माइग्रेट कर रहे हो, ओके, तो आपने क्या किया है कि पुराने फायरवॉल का सो कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप ले लिया है, ओके। सो न्यू आपको सेम टाइप का कॉन्फ़िगरेशन न्यू बॉक्स में करने हैं, लाइक होस्ट नेम सेम रहेगा, मैनेजमेंट आईपी को डिफरेंस रहेगा, अदर स्टफ सेम रहेगा, तो सो कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लो, नोटपैड पे थोड़ा सा मॉडिफाई करो एंड पेस्ट इन योर न्यू बॉक्स एंड सेव कॉन्फ़िग, एंड उसके बाद में रिफ्रेश करो, इट इज गोइंग टू अप्लाई ऑन योर न्यू बॉक्स, ओके। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सेव कॉन्फ़िग और सेव कॉन्फ़िगरेशन फाइल नेम, ओके। सो ये तीन टाइप का बैकअप होते हैं चेक पॉइंट में, स्नैपशॉट, सिस्टम बैकअप एंड सेव कॉन्फ़िगरेशन, ओके। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, आई विल ट्राई टू शो इन द लाइव। पहले हम बैकअप लेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे, फिर रिस्टोर करेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच गाइड। If you like this session, if you like my efforts, please share, like, subscribe as much as possible. Thank you very much.